Very good afternoon to my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel and Talukdar Maths. In last few classes, I have taken that is properties of definite integral. Okay, we have discussed about properties of definite integral, and today I am going to start a new topic that is called application of integral. This is very useful chapter, and as per your syllabus pattern of the syllabus, a question of 6 marks will be asked in this particular from this particular chapter in final examination, that is board level examination, okay, where it is a state board or that is called that is CBSE board. Okay, here that is before going to start the particular topic, we have to know about some basic ideas, basic concept regarding that is a definite integral. Okay, and then going to start the particular solving the problem of the particular topic. Okay, here I have drawn some figure, and you get an idea from this figure that what is the application of integral here. Okay, so first you see I have drawn this particular figure. In this figure you see there is a curve y equal to fx, that is y is expressed in terms of what? X. Y is expressed in terms of what? X. Okay, and this particular full area covered by what? X axis and curve from x is equal to a to x is equal to b, and which is actually denoted by what? By geometrical interpretation. In the first initial class of integral as a limit sum, we have proved that integration a to b fx dx represent what? Area. Represent what? Area under the curve. What area? Under this curve bounded by what? X axis. Line this and line that. लोअर लिमिट यहाँ से शुरू होगा, अपर लिमिट यहाँ तक ख़त्म होगा. ठीक है. So here you see I have chosen a small portion of this particular area. Okay, and its breadth is what? Twice. इसका breadth कितना है? Very small, dx. And what is the length? Length is what? Y. And you can consider this is like a rectangle. It is like a rectangle. So what is the small area of this? The area of the smaller region. Small region is length into breadth. Smaller region is denoted by what? Suppose dA. Suppose A is the area, then what? dA is the small area. Okay, this small area. Okay, region. Okay. And this smaller area region of the the area of the smaller region is what? Y into dx, length into breadth. Now what is the area of the region ABCD? Full area, full region का क्या area होगा? ABCD means what? You sum up some rectangle, this angle, अगर ऐसा rectangle add करें, if you add all this type of rectangle y equal to dx from here to here, कहाँ से कहाँ तक? A to B. So integration का मतलब है it is summing up. It is what? Summing up. Summing up from A to B dA. वो small area को A से B तक अगर हम add कर ले तो what will get? We will get the whole area ABCD of the particular region. ये region जो नाम दिया है ABCD. So area of this particular region is what? Integration A to B, the sum of the sum of the area of the smaller region. Smaller region को अगर add करें from A to B, what we will get? You will get the total area, and this total area and dA is equal to what? Y dx. So ultimately integration A to B y dx representing what? It is representing area under the curve y equal to fx from x equal to A to x is equal to B, bounded by what? X axis. Very important. If bounded by x axis, then always dx will come. आपको याद रखना है, if it is bounded by x axis, then फॉर्मूला में क्या होगा? y into dx मल्टीप्लाई होगा. y into what? dx. Very important. Okay, so this is the area bounded by what? The curve x axis and the ordinate. You can say this is an ordinate, this is an ordinate. From ordinate x is equal to A to what? X is equal to what? B. ठीक है. Now comes to this figure. It is a function of what? Y. X is a function of what? Y. I have drawn a figure in different way, and I am expressing x in terms of what? Y. Expressing x in terms of what? Y, and consider is a function of what?
y. Okay, and here this is the smaller region. Okay, and this length is what x. Along this direction length is what x, and along x-axis this is what the small region is what, the small length is what, dy. Okay, now what is the area of this particular region? It is x into length into breadth, x into what, dy. Okay, now total area of this particular region bounded by the curve x is equal to fy and y-axis. In this time what, bounded by what, y-axis, not x-axis. Okay, bounded by what, y-axis and curve from this point to that point. These are the point on y-axis, so I am taking y equal to suppose a point C, and this is suppose what, D. Okay, so if we integrate, if we sum up from this y equal to C to y equal to D, we will get what, total area. What is the area of the smaller region? X into dy. It is denoted by what, suppose dA. Okay, and then what is the total area? A equal to what, integration A to B dA and C to D. Okay, integration C to D dA, and which equal to integration C to D. What is dA? dA equal to what, x into dy. X into what, dy. I hope you are understanding. Okay, you are understanding. Okay, now so the smaller area dA is equal to what, x into dy, and total area is equal to integration C to D dA, integration C to D dA, and dA is equal to what, x into dy. Whenever the area is bounded by y-axis with the respect to what, curve and y-axis अगर बाउंड करे तो फॉर्मूला में क्या आएगी, dy आएगी, x into dy, and bounded by dx, तो it will be what, y into, very very simple. Okay, very very simple. Okay, so here y is expressed in terms of what, dx है, तो आप y को x में express करना पड़ेगा. Since it is dy, you have to express x in terms of what, y. तो जो भी हो फंक्शन में, तो x को आप y में कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ में क्या करना होगा, y को x में कन्वर्ट करना होगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट फिगर क्या है, बाउंडेड बाय x एक्सिस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन ABCD. जो रीजन बाउंड हुआ है ये है, एंड इसमें क्या है, एरिया ऑफ द रीजन इज दिस इज द एरिया. Okay, this area is what, bounded by y-axis, so formula is x into dy. So little different. Okay, y(x) into dy, from the figure it is clear because the area of this is x, length into breadth. Okay, and here area of the smaller region is length into breadth. Okay, length क्या हो गया इसमें, y हो गया, इसमें length कितना हो गया, x हो गया, इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस है. तो दोनों में आप लोगों को डिस्टिंक्शन रखना है. ठीक है, यू हैव टू मेक डिस्टिंक्शन ऑफ बोथ द डेफिनेशन. Okay, sometimes we will use this, sometimes we will use this. Okay, according to the need of the problem. Majority of the problem will solve by bounded by x-axis. क्या करेंगे हम, x-axis के साथ जुड़ लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. कभी कभी क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा जो x-axis से जुड़ेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, तो आप y-axis से जुड़ लेंगे. You have to bound the particular that is region with what, that is y-axis, and apply this particular formula to solve the questions. Okay, कभी कभी क्या होगा, y-axis से बाउंड करने से प्रॉब्लम आसान होगी, तो हम y-axis लेंगे, और कभी कभी x-axis लेंगे. ज़्यादा क्वेश्चन में x-axis लेंगे, वही फार्मूला ज़्यादा यूज़ होगा. ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट एरिया ऑफ द रीजन. एरिया ऑफ द रीजन दैट इज between two curves. Okay, between two curves कैसा होगा. Suppose if I give an example, suppose for a curve, okay, for a curve you have to find the area of this region. Suppose this is what A, and this is what B, and this is what y equal to fx. Okay, you have to find this area. So this area is what, below y, below what, that is x-axis. So this region is negative. This region is what, इसका वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. So here it if you consider small part, this small part is what that is called y,
and this is small breadth is called what dx, then what is the area of the smaller region? This smaller region इसका area क्या होगा? Area is what? y into dx, and total area क्या होगा? sum कर ले from a to b, तो आपका total area बन जाएगी. And you see since y is negative ना, this is below what y axis, y is negative, negative into positive, dx तो positive होगा, y into dx क्या होगा? ये negative हो जाएगी, and finally आंसर negative में आएगी. And since this is an area of a undercurve is area undercurve cannot be negative. So what you will do, you will define modulus. Okay, so area of this particular region is what? Suppose capital A है, so capital A equal to मॉडुलस देना पड़ेगा, जो नीचे पार्ट होगा उसको मॉडुलस देंगे. सपोज दैट इफ इन ए कार, सपोज फ्रॉम द ग्राफ दिस इज ए कार, ओके, y इक्वल टू fx. यू हैव टू फाइंड द एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक है. ये पॉइंट क्या है? सपोज इट इज ए, दिस इज बी, एंड बिटवीन देम दिस इज व्हाट सी. सो यू हैव टू फाइंड द टोटल एरिया. तो दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज कैपिटल A1 एंड दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज कैपिटल A2. ओके, देन व्हाट इज द टोटल एरिया? टोटल एरिया इज इक्वल टू A. सपोज A इक्वल टू व्हाट? A1 प्लस A2. व्हाट इज A1? A1 कहाँ से कहाँ तक? A to C, इंटीग्रेशन A to C बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस. कोई भी कार्व हो बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला में क्या आएगी? y इंटू डी एक्स. फॉर्मूला में क्या आएगी? y इंटू डी एक्स. दिस इज लेंथ y एंड दिस इज x, अल्टीमेटली y इंटू डी एक्स मिलेगा. नाउ दिस इज बिलो व्हाट एक्स एक्सिस, इसीलिए इसमें मॉडुलस देना पड़ेगा टू मेक एरिया पॉजिटिव. ओके, प्लस दिस एरिया A2 इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन C to B, इंटीग्रेशन C to B अगेन y dx मीन्स इट बाउंडेड बाय व्हाट? x एक्सिस. जब बाउंडेड बाय x एक्सिस होगा तो y dx होगा. ठीक है, इसमें मॉडुलस देने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ above what that is y axis. Understood? So in this way, if such type of things are come in your questions arise, then you have to use modulus sign. If from the figure आप every problem में figure draw करना पड़ेगा. when you draw the figure you understand which part is negative, which part is positive. so negative part जो आएंगे उसको क्या करेंगे आप? मॉडुलस देना पड़ेगा. ठीक है, टू मॉडुलस देने का मतलब है एरिया टू बी पॉजिटिव. ठीक है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता. now area between two curves. Area between two curves. Suppose that this is x-axis and this is suppose y-axis. Suppose one curve is this, y equal to what? Fx. Another curve is suppose y is equal to f1x, and it is what? Y equal to what? f2x. There are two curves. Okay, you have to find the area between two such that from x equal to a to what? X is equal to b. Means you have to find this area. Okay, what is the area of this region? What is the area of this region? You have to find. Okay, if you consider this first curve, what is the name? Y equal to f1x. Y equal to f1x and x-axis bound y equal to f1x, and if you see name this particular, suppose this is A, this is B, and this is C, this is D. Your region is this, and suppose that this is what M and N. Okay, understood? Now from the figure, what is your region? Area of the region, or you can say area within bracket, you see ABCD. This area equal to what? Whole area
minus this area, that means area MNCD, area MNCD minus area MNBA. I hope you understand. Your area, required area this, which is equal to total area from here to here minus blank area, minus what, ये जो डैशेस एरिया नहीं है वो एरिया माइनस कर ले तो आपका ये एरिया मिल जाएगी. नाउ एरिया एम एन सी डी क्या है? एरिया एम एन सी डी इज व्हाट? एरिया एम एन सी डी इज द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू f1x. y इक्वल टू व्हाट? f1x. फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू, तो उसका एरिया क्या होगा? बाय फर्स्ट फॉर्मूला, सिंस इट इज बाउंडेड बाय y एक्सिस, सो यू कैन y dx फॉर्मूला आएगी, y dx from x is equal to a to x is equal to b. But in this case, what is y? Y is equal to what? f1x dx. This first one. Okay. So area MNCD is equal to integration a to b f1x dx minus area MNBA. Area MNBA, MNBA, it is the area bounded by x-axis and this curve means y equal to f(x). Formula same होगा y dx because it is bounded by what? y-axis, x-axis and the curve. Okay, so that's why formula is integration a to b y dx. But in this case, y means what? f2x, second function. Okay, so here it will be f2x. So in this case, what happen? Integration a to b f2x. Clear everybody? So area between two curves होने से क्या होगा? Area under the curve first curve minus area under the second curve. फॉर्मूला क्या है? हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है या फॉर्मूला ये f2ds. ओके, ये भी ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है या I have chosen this formula. Okay, both the formula are what? Same. Basically it is the first formula. Okay, integration a to b y dx, but there are two curves involved, so this area is equal to area under this curve minus area under this curve. Okay, ठीक है. लेकिन ये देखो, सपोज इसका वैल्यू फॉर पर्टिकुलर फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस विल बी डिफरेंट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन. सपोज ये अगर बड़ा है, ठीक है, उसका वैल्यू अगर बड़ा हो जाए, उसका वैल्यू अगर छोटा हो जाए, तो दैट इज अल्टीमेटली सपोज दिस एरिया इज व्हाट? a1 एंड दिस एरिया इज व्हाट? सपोज a2. If a1 greater than what? a2, then what happen? Result क्या होगा? Positive. If a1 less than a2, then what happen? Result is what? Negative. Result क्या आएगी? Negative आएगी. So to make ensure that result is positive, तो आपका फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस देना है. एंड मॉडुलस देने के बाद क्या होगा? इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दिस, पॉजिटिव तो होगा. इफ़ इट इज़ लेस देन दिस, अगेन मॉडुलस ने क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बना लेंगी. सो इफ a1 greater than a2 और a1 less than a2, वट एवर बी द केसेस, it will be what? Positive because of modulus. Understood? I hope this part you understand. Clear? These are the formula. Area between two curve is what? Y equal to f1x and y equal to what? f2x. From x is equal to a to x is equal to b is given by this formula. Okay, given by this formula. इतनी सारी चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं. You have to write area between the curve y equal to f1x and y. फिगर ड्रॉ कर लेना. Y equal to f1x and y equal to f2x. From x is equal to a to x is equal to b is given by this. Okay, ये लिखना है. Understood? हो गया? So we discuss about three types of that is find region. Three types of region, and we also derive how to use the that is a figure to find the area of the region. Okay, there are three figures I have drawn. One is area bounded by x-axis, another is area bounded by y-axis with respect to curve, and another is what? Area between two curves. Okay, and with respect to what? x-axis. And if it is with respect to y-axis, then formula अलग होगा. ठीक है? Understood? Hope you understand.
So let us start to solve the questions. Few questions we will solve, then it will be that is more clear for you. Before going to solve the questions, let us give some idea about symmetry, line of symmetry, and how the curve is symmetrical about x-axis and y-axis. That's very, very important. If you know this, then you can draw the graph very easily. For this, you have to know about symmetry. Okay, symmetry means what? That is ये एक चीज़ है कि कोई एक लाइन अगर चूज कर ले, सपोज दिस इज ए लाइन, एंड it will divide a particular curve into two equal halves, then you can say that particular curve is symmetrical about the line. Suppose that I draw a particular shape of, that is, this is a shape. If I say this is the line, now this line divide the shape into two equal, this is suppose A, this is also A, okay, two equal half. ये पार्ट और ये पार्ट मैंने सपोज सेम कर लिया, थोड़ा सा बड़ा है, so you write like this. Okay, now both the part are what? Same. So ultimately this shape is symmetrical about this particular line. Okay, similarly suppose this is a curve, okay, graph of a function, okay, and suppose that this is a line, somehow a line, and this line divide the whole curve into two halves, equal halves. This part and that part are what? Same. So you can say the y equal to fx is a curve symmetrical about, suppose it is a line, y equal to suppose a, okay, so y equal to fx is symmetrical about y equal to a, symmetrical about y equal to a. Understood? For suppose that you draw a circle whose center is at origin, this is x-axis, this is y-axis, okay, and equation of the circle is x square plus y square is equal to what? A square. This is the circle, okay. So this circle whose center is 0 0 and radius what? A. Center क्या है? Origin में है 0 0 and radius is, suppose this is a wall radius, okay, this is a, or you can take anything, this is also a. Understood? So radius is a. So you see, if you consider the x-axis, then you see in this shape of the curve, shape of this particular circle, ऊपर में जितना है नीचे में भी इतना है, okay. तो you can say this circle is symmetrical about what? x-axis. Similarly, if you consider y-axis, you see right में जितना part है, left में भी same part है. I have not drawn the particular circle in a right manner. If you draw it in a right manner, if you see the left of y-axis and right of y-axis, there is a same region, okay. इसमें जितना part है, इसमें इतना ही part है. And also you see this x-axis and y-axis, this area of the particular circle is what? Equally distributed in fourth quadrant. This area equal to this area equal to this area equal to what? This area, okay. Understood? Here you see the power of x is what? Even. Power of y is what? Even. Only. Power of x is also even, power of y is also even. No other term is there, okay. Whenever in a curve, in an equation of a curve, you see the power of x is even or power of y is even, then you can immediately say that the equation of this, the shape of this curve, ये जो equation है उसका जो curve बनेगी, this curve is symmetrical about both the x-axis, both the axis. x-axis का symmetrical भी होगा, y-axis का भी symmetrical होगा, और you can say area of every portion, जो portion create होगा, it will be equally distributed in the quadrant. Mean in the first quadrant में जितना area होगा, second quadrant में इतना area होगा, third quadrant में इतना area होगा, fourth quadrant में भी इतना area होगा. If I draw an ellipse, अब ellipse का equation भी आप लोगों को पता है, this is the ellipse, okay, and what is the equation of the ellipse? X square by a square plus y square by b square equal to what? 1.
Okay, so in this particular equation you see power of x is even, power of y is even. So the curve is symmetrical about x axis के ऊपर में जितना है नीचे में भी इतना होगा, y axis के राइट में जितना है लेफ्ट में भी इतना होगा. ठीक है. Also you can say that whole area is divided into 4 parts and both all the parts are equally distributed. That means area in the first quadrant is equal to area in the second quadrant, area in the fourth quadrant and area in the third quadrant. All are same. Clear? So area of the पूरा ellipse ने जितना एरिया कवर करेगा, दिस एरिया इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आप निकाल ले, निकालने के बाद अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या होगा, पूरा एरिया निकल जाएगा. सिमिलरली हियर ऑल्सो इफ यू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन यू कैन इजीली फाइंड होल एरिया अंडर दिस सर्कल. सर्कल के अंदर कितना एरिया है, वो एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर. हमें जाना पाई आर स्क्वायर ना, इसमें रेडियस ए है तो ये निकल जाएगी. ठीक है. इफ यू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके एंड मल्टीप्लाई विथ 4 यू विल गेट 4 pi a square. Okay. Similarly, if you find the area in the first quadrant and multiply with 4, you will get the area under the ellipse. Okay. Why it's symmetrical about both the axes? This is the reason. Power of x and power of y are even. ठीक है. If I consider y square is equal to what 4x, so it is a parabola. It is a what? Parabola. Here you see power of y is also only even. Power of y is only even. Understood? ये समझने की कोशिश करो. Power of y is even. Here power of x is odd. So we are not considering the odd power. Okay? We are considering the power of y. When power of y is even, the curve is symmetrical about what? X axis. जैसे मैंने सर्कुल में कहा था, if power of x is even, symmetrical about y axis. Power of y is even, symmetrical about y, and that is x axis. So ultimately it is symmetrical about both the axes. If in an equation of a curve, if power of y is even, then it is automatically symmetrical about what? X axis. And you know the shape already you got in class 11. Shape of this curve is what? This way. Okay. This is your x axis. Above axis is what is the shape and below axis is whatever the shape, both the shape are same. That's why it is symmetrical about what? X axis. Symmetrical about x axis. Now there will be many type of curve like y square is equal to x. ये a का वैल्यू अगर 1/4 हो जाए तो क्या होगा, y square इक्वल x होगा कि नहीं. Similarly what happen, you can get y equal to root x. So इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y square is equal to x. तो इसका भी शेप ऐसा होगा, इसका भी शेप ऐसा होगा. समझ में आ रहा है? Shape will be same. Don't worry about that. Whenever I am going to draw, because I am very much focused on that, how to draw the graph. If you draw the graph, you can find the integration. If you do not understand how to draw the graph, it will be difficult for you. Okay, understood? So y equal to root x or y square is equal to x, same meaning. Okay, understood? So finally, here x is positive, तो ये ऊपर वाला होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, नीचे वाला नहीं होगा, जो भी हो. Then ultimately what happen? I am not considering this. So y square is equal to x. उसका शेप क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, बोथ द सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट एक्स एक्सिस. ऊपर में जितना शेप है नीचे में भी इतना शेप है. ठीक है. तो इस दिस वे यू कैन ड्रॉ द पर्टिकुलर ग्राफ. नाउ कंसिडर अनदर पैराबोला. You know that x square is equal to what, 4ay. This is also a parabola. Okay, and you already know the shape of this parabola is what? Shape of the parabola is this way. Okay, and from the graph you see that if you consider the line y equal y axis, and in the right of y axis, in the left of y axis, the shape of the curve is equally distributed. Equally what? Distributed. And from the equation, the power of x is what? Even. Power of x is what? Even. And
shape of, and from the figure, shape of the curve right of y-axis and left of y-axis is also same. So you can say that this particular curve is symmetrical about y-axis. आपको कुछ नहीं पता, आपको इक्वेशन पता है, आपको इक्वेशन दिया जाएगा, ग्राफ नहीं दिया जाएगा, तो आप इक्वेशन से कहेंगे सिंस पावर ऑफ x इज व्हाट 2 इवन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट y एक्सिस. तब जब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा तो आप ऐसा ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. ओके ओके. You got an equation of the circle like x minus h whole square plus this is the equation of the circle. It means what? Its center is h and k and radius is what? r. Center क्या है? Center at the point h k and radius is equal to r. So what will be the shape? The shape will be like that. Center is this hk and radius something r. Okay. And if h and k are both positive, the circle lies in first quadrant. If h negative, k positive, circle इधर आएगा. If h is what negative, k negative, circle इधर आएगा. If h positive, k negative, circle इधर आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ. समटाइम्स व्हाट हैपन इफ सपोज दैट इन दिस इक्वेशन इफ आई गेट x minus h whole square plus k, if I take k equal to what 0, then it is y minus 0 whole square means y square and r means what, suppose h. तो एक इक्वेशन हमें मिल गया x minus h whole square plus y square is equal to what, h. It is also a circle. इसका सेंटर क्या है h, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो सेंटर h 0 एंड रेडियस कितना है, रेडियस इज व्हाट h. तो हाउ व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व, इसका शेप क्या होगा हमें निकालना है. ओके, दिस इज ऑरिजिन एंड h0 y कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो ये पॉइंट कहाँ लाइज होगा, इट विल लाइज इन द x एक्सिस. ओके, इफ h इज पॉजिटिव, अगर h पॉजिटिव हो तो सेंटर इधर होगा, h नेगेटिव होगा तो सेंटर इधर होगा. ठीक है, मैंने पॉजिटिव लिया, सपोज द नाउ h0 इज सपोज समवेयर एल्स, दिस इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझने की कोशिश करो. दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर एवरीबॉडी? एंड फ्रॉम हियर टू हियर ये पॉइंट कैसे मिलेगी, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑन दैट y एक्सिस इज 0. सो दिस लेंथ इज व्हाट h. सपोज दिस इज a और यू कैन से दिस इज o. आई एम सॉरी, a इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो OA इक्वल टू व्हाट, h. Understood? OA equal to what, h. And now from here you see what is the radius, radius of the circle is what, h. So you can say it is equal to what, radius. It is equal to what, radius. That means this is the radius of the circle and it is the center. So ultimately what happen, circle का shape कैसा होगा, it will like that. होगा कि नहीं? This figure is not absolutely correct. Okay, this is the circle, and from here you see this point is 0 0. This is the radius, okay, h, and this is also h. ये अगर h है तो ये भी h है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2h, 0, h प्लस h. अंडरस्टूड? डायमीटर. ओके, ये डायमीटर होगा, डायमीटर ट्वाइस h होगा, तो इस ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस h से मल्टीप्लाई ट्वाइस कर लो, 2 मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगी, ये पॉइंट मिल जाएगी. सो फ्रॉम हियर दिस पर्टिकुलर सर्कल इज व्हाट टाइप ऑफ सर्कल, दिस सर्कल इज a circle touching y axis
touching y-axis at the origin. This is the equation of a circle touching y-axis at the origin. Okay. So when a equation of a circle touching y-axis at the origin, very very important, touching y-axis at the origin, its equation will be like that. Its equation will be like that. You can write x minus h whole square. Many equations, like suppose y minus 1 whole square, x minus 1 whole square plus y square equal to 1. So it means it is a circle with center 1 0 and radius what 1, and its shape will be like that. Shape will be like that. Okay. Now another, suppose that this is the circle and it is what 1 0, center is 1 0, ये क्या होगा 2 0 होगा कि नहीं, 1 ये 1 है, ये 1 है, 1 plus 1 equal to 2, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये दिस इज द पॉइंट सपोज B, it is what 2 0. If I consider another circle, x square plus y square equal to what 1 square. Okay, it means this is a circle with center. Original circle क्या था, standard equation x minus h whole square plus y minus k whole square equal to what r square. It represent any circle. इसमें भी हो सकता है, 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 यहाँ में भी हो सकता है, यहाँ में भी हो सकता है, anywhere else. It representing all the circles. Okay. Now if h equal to 1 and k equal to 0, then you are getting this one. Understood? And its shape will be like that. Clear everybody? And now again, if you h equal to 0 and k equal to 0, means I am taking center at origin. Center कहाँ लिया? This is the center. Okay. Center at origin, and radius is what? Suppose r is equal to what 1. Radius is what 1. Compare this with this. H equal to 0, k equal to 0, r equal to what 1. Clear? Then what will be the shape of this particular curve? यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है. ये अगर सेंटर होगा तो सर्कुल का डायग्राम कैसे होगा, ऐसा होगा कि नहीं? इट विल बी द फिगर ऑफ द पर्टिकुलर सर्कल. ये किसका इक्वेशन है? इसका इक्वेशन है. ये किसका इक्वेशन है? इसका इक्वेशन है. अगर आपको कहे फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन टू सर्कल, और दोनों का सर्कुल के बीच जो एरिया है कॉमन एरिया निकालना, तो आपको ये निकालना है. सो इफ यू डू नॉट नो द इक्वेशन ऑफ द सर्कुल, माई इंटेंशन इज दैट वाई आई एम ड्राइंग दिस सर्कुल और दैट सर्कुल और दिस सर्कुल. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता चले इस टाइप ऑफ सर्कुल का फिगर कैसे होती है, हाउ द फिगर इट इज. ओके, एंड व्हाट इज द फिगर ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कल. ओके, radius may be anything. I am taking 1, you can take 2, 3. So shape will be same type. Shape will be what? Same type. तो आपको जब ये एरिया निकालना है तो आपको सर्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सर्कुल should be drawn properly. And when you draw the circle properly, then you can you can find the integration. You can find the area. Okay, आप एरिया निकाल सकते हो. Easily you can find the area between two curves. Okay, so when gradually it will come, I will definitely discuss a few figures how you can going to draw. Most important thing is that if you get in an equation, if you get only the power of x is even, then it is symmetrical about y-axis, and only the power of y is even, then symmetrical about x-axis. And if both the power of x are even, x का भी power even मिल रहा है, y का power भी even मिल रहा है, then you can say what? It is symmetrical about both the axes. ठीक है? Only, very very important, only. So let us solve one two question today. So this is the basic class. So basic should be very much clear. One particular formula you got in integration a square minus x square dx is equal to what? X by 2 into root over a square minus x square plus a square by 2 into sine inverse x by a
this formula will be repeatedly used in this particular chapter to find the area of the under the curve. Okay, तो ये इंटीग्रेशन बहुत हमें ज़रूरत होगा, इसीलिए आई हैव मेंशन इट ऑलरेडी, आई हैव डन इट. सो ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो ज़्यादा यूज़ होगा, उसको आप बार बार लिखिए और याद कीजिए. ठीक है. So one question I want to solve. So find the area under the circle x square plus, ये सर्कल के अंदर एरिया कितना है. बाय यूजिंग इंटीग्रेशन यू आर टू फाइंड, you are to what? Find. Then first you know what is the circle. This circle is a circle with center at 0, 0 and radius what? A. So you must know what is the figure of the particular circle. So you must draw the figure first. So this is your, suppose, circle. Okay, this is the circle. Okay, and here this is origin, this is the point A and this is the point B. This is y axis, this is x axis. Clear everybody? Now if you know the area of this, because this circle is symmetrical about both the x axis, and you can say the area is distributed in all quadrant in same portion, same area is distributed in all quadrant. सब क्वाड्रेंट में एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दिस इज योर 0, 0. दिस व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? दिस इज द रेडियस, this is the radius. So this is x is equal to what? A. Then on this point y coordinate is 0. So what is the coordinate of this point? A0. Clear everybody? The coordinate of this point is A0. Now this is a very small, this is length, and this is called what? Small dx, and area of this small portion is y into dx. Y into what? Dx. First you write from the, what are the information you get from the circle. Given circle is x square plus y square equal to what? A square. तो इसका सेंटर क्या है? सेंटर 0, 0, radius what? A. Okay, and what are the other information? It is symmetrical about x, both the axes. It is symmetrical about both the axes. These are the information from the equation. Since power of x is only even, power of y is only even, there is no other x, y जिसका पावर क्या है, 1 है या 2 है, जो 3 है, ऐसा कुछ नहीं है. Only there is an x whose power is 2, only y is there whose power is 2. That's why it is symmetrical about both the axes. Clear? This is the figure. Figure, please draw the figure properly. Okay, my figure is not, that is good. Now what is your area? Area is this area. You have to find the area under the circle. Okay, so required area equal to total area under the circle is equal to 4 into this area, 4 into area in the first quadrant. Area in the what? First quadrant. Now 4 into area in the first quadrant means what? Area OABO. OABO. Close किया मैंने, OABO. Understood? Now OA very very important. अब बाकी क्वाड्रेंट भूल जाइए आप.
एरिया OABO इज बाउंडेड बाय व्हाट? एक्स एक्सिस. किसने? एक्स एक्सिस ने. बाउंडेड बाय व्हाट? एक्स एक्सिस एंड द कार एंड दिस कार. ओके, it is a part of a circle. Okay, and how? Because formula is what? Y dx है कि नहीं? एंड लिमिट कहाँ से शुरू होगा? फ्रॉम हियर टू हियर. एट दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 0 0, सो x का वैल्यू क्या है? 0 है. एंड एट दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज a0, तो नेक्स्ट लिमिट, लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट क्या होगा? a होगा. अंडरस्टूड? सो आपको क्या होगा? इंटीग्रेशन 4 तो है मल्टीप्लाई 0 to a y dx. Since it is bounded by x axis, the formula is what? Y dx. Now how to get y? You are getting y from this. ठीक है? Understood? So find y from the circle. सर्कुल में साइड में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? वाई ए स्क्वायर. And y square equal to what? A square minus x square. Clear? And from here y equal to, it may be plus minus. I am taking only positive square root. Because why I am taking positive square root? Because I am discussing about what? First quadrant. First quadrant के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ. ठीक है, समझ में आ रहा है? I am taking first quadrant, therefore value of y will be positive, not minus. So here you can take 4 into integration 0 to a, y means root over a square minus x square dx, and which is the integral I have just given to you. So mention the integral. 4 into formula क्या है? x by 2 into a square minus x square, जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करो, प्लस a square by 2 into sin inverse x by a, and limit is 0 to a. Limit is what? 0 to a. Now if you put the limit, अब लिमिट पुट करेंगे. इफ यू पुट अपर लिमिट हियर, इफ यू पुट x इज इक्वल टू व्हाट? a, देन इट बिकम्स 0. 0 इंटू वट एवर भी, ये क्या होगा? 0 हो जाएगी. If you put that plus a square by 2 तो है, and if you put a here, sin inverse a by a cancel, it becomes what? Sin inverse 1. Okay, upper limit हो गया, minus lower limit. When you put 0, if you put 0 here, whatever be the value here, 0 into this 0 हो जाएगी. Okay, and if you put 0 here in this result, okay, if you put x equal to 0, sin inverse 0 is equal to what? 0. Clear everybody? I hope you understand. अपर लिमिट पुट करने के बाद ये टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म क्या हो रहा है? ये हो रहा है a square by 2 into sin inverse 1. And if you put lower limit, this term becomes what? 0. So 0 plus a square by 2 into, if you put x equal to sin inverse 0 equal to what? 0. Ultimately result 0 होगा. ठीक है? You know what is sin inverse 1? Sin inverse 1 is equal to what? Pi by 2. So from here 4 into a square by 2 into sin inverse 1 is what? Pi by 2. फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या होगा? पाई a square. And we know that what is the area of a circle? Pi r square. R means what? A. So in this way you can find the area of a area under curve. ठीक है? How we start? Very very important. We must know about the equation. ये कौन सा इक्वेशन? ये सर्कुल का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन है. ये सारे चीज़ आप लोगों को पता होना होगा. After knowing this, what we will do? You will find, you have to check whether this curve is symmetrical about x-axis or y-axis or both axis. You have to get the information. अगर कुछ है तो उस हिसाब से सॉल्व करें. And if it is not symmetrical with any of the axis, then you can use in a normal process. Okay, as per the need of the diagram. Diagram जैसे होगा उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसके बाद we have to find the area in the first quadrant and multiply it by 4 and get whole area.
under the circle. And this y dx, why? Because it is bounded. This area is what? First quadrant क्या है? Bounded by the curve and bounded by the what? Circle का part है and x axis. That's why I have used the formula y into dx. Limit is 0 to a. Why? Because it is starting 0 and at what? A. Understood? And at what? A. So limit 0 to a. And then the formula. Okay? Then the integration formula. And finally अपर लिमिट पुट करना या लोअर लिमिट पुट करना, इसके बाद आपका डेस्टिनेशन जो आंसर है वो मिलना. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल प्रोसीड्यूर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, आई होप you understand what I want to convey to you. Okay, this chapter is compulsory chapter, but here is the problem is only that tracing the graph. आप ग्राफ कैसे ड्रा करें, कार का ग्राफ कैसे ड्रा करें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले और शेप ऑफ द कार में कौन सा पार्ट ले, इसके बाद कैसे इंटीग्रल यूज़ करें, ये सारे बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस हो रहा है या बाउंडेड बाय वाई एक्सिस हो रहा है, ये सारी चीज़ को देखना ज़रूरी है. इसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. So I do not want to continue this particular class now. So I have given you some glimpses of ideas. Just I सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा पॉइंट कहा था, उसको नोट करके दे दीजिए, आप लोगों को याद रहेगा. फर्स्ट वन, सिमेट्री. If in a car in a equation of a car only power of x is even, then the curve is symmetrical about y-axis. Power of x even y-axis, remember it. And if बाकी लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, if power of y is only even, then ये जो कर्व है symmetrical about what? X axis. Okay, if power of y is only even, then symmetrical about x axis. Number 3, power of both x and y are even only, very very important only. Why I am saying only repeatedly? Then symmetrical about both axes. Symmetrical about both axes. This 3 information you must know, and if you know that, then you can easily draw the particular figure of the from the equation. Equation अगर दिया जाए तो आप figure draw कर सकते हैं. And I have discussed about the circle. When the circle is what is the equation circle touching y axis at origin, उसका क्या equation है. What is the equation of circle touching x axis at the origin, इसका equation क्या है. ये सारी चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है. What is the equation of the parabola, what is the equation of the ellipse, ये सारी चीज़ जानना होगा. इसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो पैराबोला 2 टाइप का है. इट इज़ क्या है, इट एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड इन सम पैराबोला एक्सिस इज व्हाट वाई एक्सिस. 2 शेप है, ये आपको जानना है. ये सारे जान लीजिए. ये दिस इज द पैराबोला. इसका फॉर्मेट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ओनली पावर ऑफ y इज इवन. सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, x, दैट इज x एक्सिस. एंड इफ द शेप इज लाइक दैट, so what is the equation? X square equal to what? 4y. So it is symmetrical about what? Power of x is only even, symmetrical about y axis. These are the 2 important. Okay, and what is the
मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ये भी हमें चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या है? दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ओके। एंड इफ आई ड्रॉ एस पैराबोला हियर, तो दोनों के बीच का एरिया क्या होगा? ये एरिया होगा। तो ऐसा कुछ हम करेंगे क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द मॉडुलस फंक्शन। तो दोनों के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। ये सारे क्वेश्चन रहेगी, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो एंड देन देयर विल बी अनदर पॉइंट, एरिया बिटवीन टू एनक्लोज कर्व। एरिया बिटवीन टू कर्व डिस्कस किया है, एनक्लोज जब होगा तो क्या होगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आइडिया दे देते नेक्स्ट क्लास में, अच्छा होगा। सपोज दैट ये एक कर्व है और ये एक कर्व, सपोज दिस इज y इक्वल टू f1x एंड दिस इज y इक्वल टू f2x। दोनों के बीच में एरिया एनक्लोज्ड ये दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट हैपन, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कर्व और ये कर्व दोनों क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट ए बी and this is the point, suppose I'm sorry, it is suppose SC and this is what BD, okay. Coordinate of this point is what? SC. After getting the solution, x coordinate, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू c है, s का वैल्यू b है, y का वैल्यू d है। तो this is what, from here it is x equal to what? A, and this is what, from x is equal to what? b। हम x के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व माइनस एरिया दिस कर्व, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला इंटीग्रेशन। क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा? f1x dx। सिंस इट इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस तो dx आएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a टू b माइनस इंटीग्रेशन एरिया अंडर ब्लैंक पार्ट। ब्लैंक पार्ट कौन सा है? कौन सा कर्व ने बाउंड कर रहा है? दिस कर्व f2x बाउंडेड बाय द कर्व f2x एंड x एक्सिस। सो इंटीग्रेशन a to b f2x। We do not know what will be the result, so that's why modulus is given. This formula and previous another formula I have given, area between two curves, formula are same, लेकिन पहले वाला जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स का जो फार्मूला मैंने दिया था उसमें x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b वाज गिवन, ये दिया हुआ था फिगर में। इसमें नहीं है। इसमें क्या करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे, आपको दो कर्व दिया जाएगा और वहाँ आपको कहेंगे कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दिस टू कर्व। तब आप क्या करेंगे? आप दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। दोनों कर्व को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप ये पॉइंट भी निकालेंगे, ये पॉइंट भी निकालेंगे। निकालने के बाद वहाँ से x का वैल्यू a मिल जाएगी और वहाँ में x का वैल्यू b मिल जाएगी। तब आप लिमिट a टू b लिख सकते हो। एंड प्रीवियस जो मैंने डायग्राम दिया था वहाँ में x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b ऑलरेडी गिवन इन योर फिगर, ओके। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस देन यू कैन गेट एन आइडिया why I should solve the equation and find a and b। एंड कुछ क्वेश्चन होगा वहाँ में x का वैल्यू a और x का वैल्यू b दोनों दिया जाएगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दिया जाएगा, आपके लिए आसान होगी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज नॉट वेरी मच टफ एंड बट टू ट्रेसिंग द फिगर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर ले तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई डोंट वरी अबाउट दैट एंड आई विल वेरी सिंपली एंड ईजिली solve the problem to make you understand, okay. Hope you enjoy my class. This is the first lecture of this particular topic. So basic thing I have discussed, what is the symmetry, how can there is find the area of a particular region bounded by what? The curve and x-axis, and bounded by the curve and y-axis. What is the area between two curves and what is the area enclosed between two curves? Very very important. ये चार चीज़ है. This all the problem will be segregated, distributed in these four parts. ज़्यादा प्रॉब्लम आप लास्ट जो enclosed एरिया है वहाँ से होगा, तो आप
वहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस. होप यू अंडरस्टैंड. So thank you very much. All the best. Have a good day ahead.